हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रशियन सारी। और आज का जो क्विज सेशन वाला वीडियो है वो रिकॉर्डेड जाएगा। थोड़ी थकी हुई भी हूँ क्योंकि घर के कामों में इन्वॉल्व थी आज, और फ्राइडे भी था, तो लाइव आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। एंड तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ और आपको लाइव मिल जाएगा, मतलब लाइव एज प्रीमियर होता हुआ मिल जाएगा, तो आपको वो सेम ही लगेगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के साथ में। और आज वीडियो जल्दी ही रिकॉर्ड हो जाएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है एज कम्पेयर लाइव आने में, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म? हाइब्रिडाइजेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हैवियर आइसोटोप लेबलिंग। Recombinant DNA techniques. Next question is that the construction of the first recombinant DNA by linking antibiotic resistant gene with a native plasmid of Salmonella typhimurium was done by Smith and Wilkins, Carey Mullis, Urban Nathan, Howard Boyer, Stanley Cohen. Howard Boyer and Stanley Cohen is the right answer. अगर आपने रिकॉर्डेड वाला सेशन देखा होगा ना मेरा, जिसमें एनसीईआरटी रीडिंग है, उसमें भी मैंने ये मार्क करवाया और ये क्वेश्चन है भी। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद। लास्ट वन ये भी मैंने मार्क करवाया हुआ है, पीवाईक्यू है ये शायद। एगरोस extracted from seaweed find use in tissue culture, PCR, gel electrophoresis, this marked as well। भाई उस सेशन में तो पूरा पता ही रखा है मैंने कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं आते। What is the criteria for DNA fragment movement on agarose gel during gel electrophoresis? The smaller the fragment, the farther it moves. Correct answer. DNA fragment generated by the restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by electrophoresis. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is termed as recombinant protein, single cell protein, humulin transposon. Recombinant protein. Okay. Question number 8. Consider following statement. Asexual reproduction preserve genetic information while sexual reproduction permit variation. Traditional hybridization often lead to the inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desirable gene. Traditional hybridization often lead to the inclusion and multiplication of desirable gene along with the desired gene. Recombinant DNA technology allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene in the target organism. मैं मुझे तो सारे सही लग रहे हैं, सारे ही सही हैं. The enzyme that seals 5-phosphate and 3-OH polynucleotide and while creating a recombinant DNA molecule is that seals alkaline phosphatase, DNA ligase, DNA is restriction endonuclease. DNA ligase, yes. In a DNA gel, the fragment of 2 kb and 3 kb will be 2 kb near to the wells while 3 kb opposite the towards the opposite end. 2 kb near to cathode while 3 kb near to anode. 2 kb closer to opposite end of gel while 3 kb close to well. I don't know इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स में दे रखा है, फिगर्स दे रखी हैं, बट स्टिल सही है। छोटा वाला जो है वो अपोजिट में जाएगा जेल के, और बड़ा वाला जो है वो क्लोज रहेगा। The visualization of DNA band on the gel can be done with the help of ethidium bromide. Oh, more than one is correct. UV rays, ethidium bromide, chromogenic substrate. देख लेते कौन सा मोर देन वन करेक्ट है, यूवी रेडिएशन और इथिडियम ब्रोमाइड। ओके, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए।
Moral of the question is this. Given below are four statements pertaining to the separation of DNA fragment using gel electrophoresis. Identify the incorrect statement. DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal. Okay. DNA fragment travel along the surface of gel whose concentration does not affect the movement of DNA. The smaller the DNA fragment, the greater the distance it travel through it. Pure DNA can be visualized directly by exposing to UV radiation. डी तो गलत सा लग रहा है मुझे. देखते हैं ए बी सी पे जाते हैं. ए बी डी. इसमें विथीडियम ब्रोमाइड वाला नहीं लिया. The smaller the DNA fragment, the greater the distance it covers. Okay, first C हमारी, यानी हमारी ए बी डी तीनों गलत है और सी सही है. चेक करते हैं इसको. The smaller the farther it moves, greater distance travels. तो बात तो वही हो गई ना. यूवी रेडिएशन डीएनए फ्रेगमेंट. मुझे समझ सा नहीं आया. आई नीड टू सी दिस. So please look at this question that has come in 2019. There are four statements pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis. So identify the incorrect statement. So now look at this again. DNA is negatively charged, this much is correct. So it is loaded onto the gel towards the anode terminal. That would be incorrect. DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA. No. And smaller the size of the DNA fragment, larger is the distance. This is the sieving effect. This is what NCERT says. This is absolutely right. And pure DNA molecule, pure DNA can be visualized directly. No. It has to be stained with ethidium bromide. So A, B and D. Option 4 is the correct answer. ठीक है. मैं इनकरेक्ट करेक्ट में कंफ्यूज हो गई. The Tec polymerase is obtained from Thiobacillus ferroxidans. Bacillus पढ़ने पढ़े भी नहीं जा रहे मुझसे ये. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. Thermus aquaticus. Which of the following statements is incorrect with respect to polymerase chain reaction? Incorrect. Repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. Thermostable DNA polymerase is isolated from the bacterium Thermus aquaticus. Each cycle in PCR has 3 steps. First is primary annealing, second is denaturation, and third is extension of primers. In PCR, multiple copies of gene of interest are synthesized in vitro using 2 sets of primers and DNA polymerase. ये सही हो गया हमारा. The figure below shows 3 steps A, B, C of polymerase chain reaction. Select the correct identification together with what it represents. A is denaturation, temperature of about 60 degree. B is denaturation. B भी denaturation, A भी denaturation नहीं. Extension in the presence of heat stable DNA polymerase. Correct बताना ना. Correct. Select the incorrect statement. Separation of DNA fragment occur based on their size in agarose gel. Blue-white selection involves insertion and inactivation of beta-galactosidase. Treatment with ice-cold calcium enhance efficiency of transformation in host cell. Extension step during PCR is based on thermolabile nature of Tec polymerase. Okay. Incorrect. No, last one is incorrect. Thermolabile nature of Tec polymerase. Show me in NCERT. Thermostable. Thermolabile का मतलब क्या होता है? Thermolabile. Deactivated by heat. Okay. Thermostable का opposite हो गया. Downstream processing does not involve biosynthesis, separation, purification,
centrifugation, biosynthesis, separation, purification, centrifugation, separation, नहीं यार, biosynthesis. Which one is considered a molecular glue? DNA ligase. The enzyme known as molecular Caesar restriction endonucleases. Following are the steps in the formation of recombinant DNA by action of restriction endonuclease. Which one of the given option incorrectly identify the step? Component label A, B, C, D. Step A. Exonuclease cut the DNA between G and A only when the sequence G is present. B. R sticky ends are formed. C. DNA fragment join at stickate by DNA ligase. Restriction enzyme ECOR-R1 cut the strand of DNA a little away from the parental but between the two base of on the opposite strand है. फर्स्ट वन ही गलत है भाई. यस यस यस. In a DNA fragment is cut by ECOR-R1 at a specific recognition site, then sticky ends, blunt end cannot be obtained, sticky end cannot be obtained, construction of recombinant DNA would not be possible. The plasmid with one side get cut into two fragments. Blunt end cannot be obtained. Get cut into two fragments. अरे यार सही था, पहला वाला ही लगाना. The first recombinant DNA was constructed by linking an antibiotic-resistant gene with the native plasmid of E. coli. नहीं, salmonella. First recombinant DNA. Okay. Select the correct statement. A restriction endonuclease cut both exonuclease cut both strand of foreign DNA as well as vector DNA at specific palindromic sequence. A restriction endonuclease is named on the basis of scientific name and strain of bacteria from which is isolated. All restriction enzyme cut the strand of DNA in the center of parent. ये तो गलत हो गया. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment generate different kind of sticky end. B है सही. Gel electrophoresis is used for cutting of DNA, separation of DNA, obviously separation based on their size. In recombinant DNA technology or genetic engineering, elution means separation of DNA from the last one. The separated band of DNA are cut out from the gel and extracted from the gel piece. Which one of the following carries a natural plasmid that can most effectively and exclusively be used in transforming plant cell only? Agrobacterium tumefacium. A typical gel agarose gel electrophoresis. Lane 1 shows undigested DNA fragment. Lane 4 shows largest DNA particle towards Y. The procedure helped to form clone of DNA. Procedure take place as the DNA fragment are double-stranded. Okay, सही है हमारा. Lane 1 shows undigested DNA fragment. This is lane 1. 28. DNA fragments separated by gel electrophoresis are known. Mark the incorrect statement. Band 3 contain more positively charged DNA molecule than band 1. Band 3 indicate more charge density than band 1 and 2. Band 1 has longer DNA fragment than bands 2 and 3. All bands have equal length and charges, but they differ in base composition. सही है भाई. बैंड 1 पास में है तो ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा वो. ये साइज में देख के नहीं जाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में. अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी जाएंगे हम. During the process of gel electrophoresis, DNA move towards the cathode of the electrophoretic chamber as the charge of DNA is negative. Oh, anode. Cathode anode. Anode is positive. Okay.
Generally, genetically engineering plant are generated in laboratory by altering their genetic makeup. This is done by adding one or more gene to a plant's genome by biolistic method or agrobacterian tumefacian mediated transformation, DNA injection or heat shock method, fusing liposomes to intact plant cell, bacillus thuringiensis mediated transformation. First आएगा पूरी तो थी. Method of gene transfer that involve use of electrical impulse of high field strength to increase permeability of membrane by creating transient pores in it is microinjection, electroporation. All the following are transformation procedure except spooling. Which following are vectorless gene transfer except one. Mark the except one. Cosmid. To transform a bacterial cell with recombinant DNA, which of the following is required? बैक्टीरियल सेल ट्रांसफर करना है. सिलेक्टेबल मार्कर नहीं भाई. डाइवेलेंट कैल्शियम आयन चाहिए होगा. Which of the following is a not indirect method of gene transfer? कौन सा इनडायरेक्ट मेथड नहीं है? बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. बीडी ऑप्शन ही नहीं है भाई. बदतमीजी देखो मेरी. इलेक्ट्रोपोरेशन, बैक्टीरियोफेज, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. अगर देखें तो ए बी होना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से. डी है भाई. नॉट इनडायरेक्ट मेथड यानी इलेक्ट्रोपोरेशन और केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर एक डायरेक्ट मेथड है और बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट एक इनडायरेक्ट मेथड नहीं है. लास्ट के दो एक इनडायरेक्ट मेथड नहीं है तो ये डायरेक्ट ही तो होगा. ये इतना घुमा फिरा के बहुत बदतमीजी है यार नीट में. Which of the following are used in gene cloning? Plasmids. Okay. The vector used to transfer gene to produce pest-resistant tobacco plant is TI plasmid. Part of plasmids such as PBR322 responsible for controlling the copy number of alien DNA ori. ROP segment codes for ROP नीचे की साइड. प्रोटीन फॉर ट्रांसलेशन, रेसिस्टेंट प्रोटीन, क्लोनिंग साइट, प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन. डायग्राम याद करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए सेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल थ्रू अ वेक्टर. कंसीडर द फॉलोइंग फोर agent in this regard and select the correct option about which one or more of these can be used as a vector. प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज तो पक्का है ही वेक्टर. बैक्टीरिया भी यूज आई डोंट थिंक सो. आई विल गो विथ 3. ओके बैक्टीरिया यूज नहीं करेंगे. सही किया है मैंने. A and B in PBR shown in the figure respectively represent recognition site sequence of palm sal. Third is answer. Hooray! Which of the following option is correct about Agrobacterium tumefacium? प्लांट्स में यूज होता है तो पैथोजन ऑफ प्लांट. ये करके देखिए क्या. नहीं. Its TI plasmid is modified into a cloning vector which is no more pathogenic. Okay.
Insertion inactivation is used for selection of recombinant producing pest-resistant crop, enhancing nutritional value of food, reducing post-harvest losses. Selection of recombinant. Selection of recombinant is based on all except one. Find out the exception. Expression and non-expression of genes encoding for tetracycline resistant gene. Expression and non-expression of gene encoding for insulin resistant gene. यही है भाई, यही है. Which recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase? This result in the following except insertion, inactivation. Recombinant DNA colonies do not produce any color. Inactivation of enzyme, chromogenic substance is converted into product by recombinant colonies. Okay, chromogenic substance is converted into product by recombinant colonies. If a foreign gene is inserted into PBR322 by using restriction enzyme BAMH1, the selection process for identifying recombinant requires plating on all except. ये तो पढ़ा ही नहीं है कहीं, तो यही आंसर है इसका, क्योंकि इस पे तो ग्रो करेगा, इस पे नहीं, एक पे करेगा एक पे नहीं करेगा, जिसके भी अगेंस्ट जाओगे तुम. और न्यूट्रिएंट मीडियम विदाउट एंटीबायोटिक्स पे तो करेगा ही. Today we know more than 900 250 strain restriction enzyme. NCERT line. Read the following statement. Restriction enzyme are obtained only from eukaryotes. The first discovered restriction endonuclease was EcoRAR1. First is incorrect क्या? Oh, both the statement are incorrect. क्यों? फर्स्ट क्या था फिर? साल्मोनेला टाइफी वाला. हिंड 2. ओके यार, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है. हिंद 2, साल्मोनेला टाइफी और क्या EcoRAR1, सब में कंफ्यूज रहती हूँ. मुझे क्लियर करनी पड़ेगी अपने माइंड में ये चीज़. आर सिंथेसाइज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सेल. ओह नहीं भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया ओनली. E. coli is a commonly used host for gene cloning because it is free from elements that interfere with replication, and recombinant of DNA is easy to transform. It supports replication of inserted DNA. All of these. Okay, यहाँ होता है हमारा सेशन खत्म. 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट. बाय बाय. सुबह मिलते हैं लाइव सेशन में, लाइव स्ट्रीमिंग में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहें, कमेंट कर दीजिए. कुछ पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए. कोई आपको कैसी लग रही है, बेनिफिशियल है भी या नहीं है, तो कमेंट कर दीजिए. मुझे पर्सनली बेसिस पे बहुत बेनिफिशियल लग रही है मेरे खुद के लिए. होप सो आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो ही रहा होगा. कुछ नहीं भी हो रहा ना, तो रोज़ 50 क्वेश्चन हो रहे हैं बायो के, और पता भी नहीं चल रहा कि कब हम टाइम कहीं भी वेस्ट कर देते हैं. और ये क्वेश्चन दिमाग में रहेंगे. जब क्वेश्चन गलत करते हैं तो दिमाग में रहते हैं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है. तो आप लोग भी अटेंड कीजिए, क्विज रेगुलरली अटेंड कीजिए. बाय बाय.